So the structure of a compact bone, right? And compact bone में exclusive character क्या है? Mammal का. The presence of Haversian canal or Haversian system, right? And Haversian canal को connect कौन करता है? Actually, the strength of the bone is because of presence of what? Now, because of the presence of the calcium salt plus what? Collagen fiber. इसलिए मैंने आपको लिखाया था कि वहां पे कोलाजन फाइबर और व्हाइट फाइबर की वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. सेकेंडली, as it is covered by the periosteum and endosteum. And periosteum and endosteum, I told you in the previous class, it is belongs to dense regular connective tissue. याद है? सिथ connective tissue. And सिथ क्या है? Dense regular है, मतलब white collagen fiber present होगा. And that white collagen fiber which is present in the periosteum as well as endosteum actually penetrate into the matrix. And that penetration of the collagen fiber into the matrix makes the matrix very again strong. इसलिए बहुत ज्यादा strong होता है bone in comparison to others. तो clear है? हम लोग अभी थोड़ा सा discussion करेंगे different type of bone marrow. Then we'll go for the different type of bones. So first आते हैं different type of bone marrow. How many type of bone marrow just I told you in the previous? कितने type का bone marrow है? एक होता है red bone marrow, second is yellow bone marrow. First is yellow. Yellow bone marrow is present in bone marrow cavity of compact bone. मतलब यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ गया कि कॉम्पैक्ट बोन में बोन मैरो कैविटी होता है, स्पॉन्जी बोन में बोन मैरो कैविटी एब्सेंट है. मैंने आपको कल प्रीवियस क्लास में ही दिखाया था. प्रेजेंट इन द बोन मैरो कैविटी ऑफ कॉम्पैक्ट बोन. एंड कॉम्पैक्ट बोन कहाँ पे प्रेजेंट है? शाफ्ट और एपिफाइसिस. कहाँ पे है? शाफ्ट को अदरवाइज क्या बोलते हैं? डायफिसिस. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ येलो बोन मैरो? मेनली कंसर्न्ड विथ फैट स्टोर करता है. ये mainly the function of the yellow bone marrow is for the storage of the fat, but act as hemopoietic or erythropoietic organ. What is the meaning of hematopoietic organ? The organ which form the blood cells or blood is called as hematopoietic or hemopoietic, आप जो भी बोलिए. So yellow bone marrow can be act as hematopoietic organ or hemopoietic organ during emergency. And what is that emergency? ना supposed to be मान लेते हैं excessive bleeding. जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है तो ये येलो बोन मैरो चेंज होके रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है. एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, बस समझ लीजिए कि हाउ द येलो बोन मैरो एक्ट एज ए हेमाटोपोइटिक ऑर्गन ड्यूरिंग द इमरजेंसी ना, बिकॉज द येलो बोन मैरो विल बी चेंज इनटू रेड बोन मैरो. एक्चुअली हेमाटोपोइटिक ऑर्गन आपके बॉडी में कौन है? रेड बोन मैरो. सो दिस इज एक्चुअली चेंजिंग फ्रॉम येलो टू रेड during the emergency situation like your excessive bleeding. So this is all about the yellow bone marrow. Now we are coming to the red bone marrow. Red bone marrow मैं already बोल चुका हूँ. It is present in the spongy bone. And spongy bone को otherwise क्या बोलते हैं? Cancellous bone. स्पॉन्जी बोन का अदर नेम है कैंसिलस बोन. एंड स्पॉन्जी बोन कहाँ पे प्रेजेंट है?
डायफाइसिस की एपिफाइसिस ऑफ एपिफाइसिस। ऑलरेडी मैं आपको बोन का स्ट्रक्चर समझा चुका हूँ, इसीलिए अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। प्राइमरी हेमाटोपोइएटिक ऑर्गन, अच्छा ये हेमाटोपोइएटिक ऑर्गन जो रेड बोन मैरो है, क्या ये एडल्ट के केस में है या फीटस और एम्ब्रियो के केस में भी है? In case of actually early embryo, who act as a hematopoietic organ? Yolk sac. And in case of that is fetus, who act as a hematopoietic organ? Liver. And in case of adult, it is red bone marrow. तो याद रहेगा। देखो पहले जो अर्ली एम्ब्रियो मतलब पूरा एकदम स्टार्टिंग वाला, एकदम स्टार्टिंग में कौन ब्लड सेल फॉर्म करता है ना, यॉक। Then it is liver. Then after the maturation or birth, it is what? Red bone. समझ में आ गया? कंप्लीट है सबका? चले हम लोग नेक्स्ट पेज में। Now we are coming to the difference between the dried bone and decalcified bone. Dried bone कब होगा? When the bone is being treated with what ना high temperature. जब bone को हम लोग high temperature में treat करेंगे, then the bone will be called as what ना dried bone. And when the bone is treated with diluted hydrochloric acid, then the bone is called as what ना decalcified bone. अब आप लोगों को समझना है कि बोन का कंपोजिशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। The matrix is composed of different type of inorganic and organic, right? Organic percentage what? 30 and inorganic percentage 70. High temperature will affect organic or inorganic. When the high temperature will be exposed to the bone, then protein part will be damaged or non-protein part will damage. And protein part comes under what? Organic, right? And protein is the building block. So if the protein will be lost or the protein will be denatured or the protein will be break down, then what will be happen? Bone can easily break, yes. Yes or no? So bone can be easily break and उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे ना brittle. समझे? तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग अगर डिकैल्सिफाइड करते हैं बोन को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कैल्शियम पार्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक पार्ट विल बी लॉस्ट, द प्रोटीन पार्ट विल बी प्रेजेंट, राइट? उल्टा हो जाएगा पूरा। देन उस केस में क्या होगा? बोन में प्रोटीन तो होगा, उसका स्ट्रक्चर तो होगा, बट दैट बिकम सॉफ्ट, क्योंकि हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट ना कैल्शियम। तो बोन जो है वो रबर टाइप का हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो पॉइंट नंबर 2 contains mineral matter and it is without any minerals. Number 3, organic or living or protein is absent. यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होगा। फिर प्रोटीन को हम लोग लिविंग पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस रह सकता है कि लिविंग किस में प्रेजेंट होगा लिविंग पार्ट और किस में लिविंग पार्ट एब्सेंट होगा। एंड दिस इज नॉन प्लायबल। प्लायबल मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल। नॉन प्लायबल और नॉन फ्लेक्सिबल, सो ब्रिटल और फ्रेजाइल, ये हो जाएगा आपका प्लायबल।
और फ्लेक्सिबल। यहाँ से बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस रहता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द टाइप्स ऑफ बोन। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था कि एक्चुअली बोन एक्चुअली forms from the different structure, right? And the process of the formation of the bone is called as what? Ossification. And ossification के लिए क्या requirement चाहिए? Matrix. And matrix हम लोग previous class में पढ़े कि it is composed of inorganic and organic, right? So when the conversion of the change of the structure into bone, that is called as ossification. And mainly मैंने आपको बताया था जब cartilage हम लोग पढ़ रहे थे, mostly the cartilage is present in the embryo, right? And that will be converted into bone, and when the bone changed from or formed from the cartilage, then that bone is called as what? Na cartilaginous bone. And आपके बॉडी में जो मैक्सिमम बोन है वो कौन से कैटेगरी में आता है? कार्टिलेजिनस, ठीक है? But actually bone is of 4 different types. Cartilaginous bone, your that is what na membrane bone or dormal bone, sesamoid bone, visceral bone. मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूँ कि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है, खाली एग्जांपल आता है. So let's comes to the example part. Types of bone. Number 1, याद रखिए यहाँ पे ossification, that is the process of formation of bone. Process of formation of bone is called as ossification. So number 1, cartilaginous or replacing bone or endochondrial bone. Here it is actually the ossification of cartilage. Ossification of cartilage gives rise to the cartilaginous or endochondrial or replacing bone. Example ही सबसे ज्यादा important है. And what are the example? Mainly जितने भी आपका long bones present है. Long bones are present in which part of your body? Limbs. इसलिए long bone को हम लोग limb bones भी बोल सकते हैं. तो limb bones में कौन कौन आ जाएगा? Humerus, femur, radius ulna और रेडियो ulna. रेडियस ulna अलग अलग, अगर हम कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना, रेडियो ulna. सेपरेट कर देंगे तो रेडियस एंड अल्ना. वैसे ही टिबियो फिबुला, सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टिबिया एंड फिबुला. गर्डल बोन, गर्डल बोन मतलब क्या है, पेक्टोरल गर्डल एंड एक्सेप्ट, ये है क्वेश्चन, एक्सेप्ट क्लेविकल. क्लेविकल नाम तो सुने हो ना, द कॉलर बोन, हियर इट इज प्रेजेंट कॉलर बोन. ऐसे लंबा एक बोन है कि नहीं दोनों साइड में, दैट इज कॉल्ड एज कॉलर बोन. कॉलर बोन कम्स अंडर द पेक्टोरल गर्डल, बट इट इज नॉट कम्स अंडर द फर्स्ट कैटेगरी. तो ये एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन आता है. और क्या हो जाएगा ना, रिब्स हो जाएगा. These are the list of the example comes under the cartilaginous. Number 2, membrane or dormal or investing bone. What is actually, it is the ossification of dermis of skin. याद करिए डॉर्मिस एंड एपिडर्मिस मैंने बताया था, याद है ना. डॉर्मिस इज मेड अप ऑफ व्हाट, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. याद आया.
Whereas the epidermis is made up of what? Epithelial tissue. Which epithelial tissue? Keratinized, stratified squamous. याद आया? Visualize होना चाहिए. तब जाके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. So ossification of the dermis of the bone. So यहाँ पे dermis part of the skin being changed. तो भाई dermis जो है वो skin के नीचे है. ऊपर जो है वो एपिडर्मिस है, उसके नीचे क्या है? डॉर्मिस. तो डॉर्मिस आपका कैसे होगा? सीट लाइक होगा कि नहीं? जस्ट लाइक ए सीट. If the seat or the dermis part of the skin will be changed into bone, then that bone will be looks like what? Bone भी तो flat होगा, bone भी तो सीट और पट्टी की तरह होगा कि नहीं? बस इमेजिन करिए आपके बॉडी में कहाँ कहाँ फ्लैट बोन, स्कल होगा. ऐसे ही याद रखते हैं भाई, लर्न करने की जरूरत नहीं है. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताइए? बताइए ना. एक तो हो गया स्टर्नम, स्कल बोन. स्कल बोन में देखिए पूरा क्रेनियल बोन, फेसियल बोन ऑल कम्स राइट. टोटल स्कल बोन जो है वो आ जाएगा नॉर्मल बोन के अंदर, सारे के सारे फ्लैट. और क्या होगा? क्लेविकल. क्लेविकल इसी के अंदर आ जाता है राइट. नाउ नंबर 3. सिसामॉइड. Sesamoid bone, here it is actually the ossification of tendon. Ossification of tendon. Tendon किसको किसको कनेक्ट करता है? Bone to bone to bone. And this bone to bone cartilage करता है बेटा. सॉरी लिगामेंट करता है. तो यहाँ पे हम लोग टेंडन पढ़ रहे हैं. तो टेंडन किसको किसको कनेक्ट करेगा? बोन टू मसल्स. नाउ ये जो बोन टू मसल से टेंडन कनेक्ट करता है, दैट टेंडन विच इज प्रेजेंट at the junction between the two, that is long bones. What is that? एक तो फीमर हो गया, दूसरा हो गया कौन सा? टिबियो फिबुला. वहां पे जो टेंडन है ना, that tendon actually ossified to form the bone. and इसका एग्जांपल सिर्फ एक ही आ जाएगा. हाँ, पैटेला. पैटेला को अदरवाइज क्या बोलते हैं? नी कैप. Number 4, that is visceral bone. And first of all, remember कि visceral bone human being में absent है. And what is the definition of this? Some bone detached from a skeleton or endoskeleton and comes close to lie near visceral organ to protect them. ये बहुत ही जेन्युइन चीज है कि कभी कभी क्या होता है ना, मेन एंडोस्केलेटन, जो मेन पार्ट ऑफ एंडोस्केलेटन है, वहां से कुछ बोन जो है वो डिटैच हो जाता है. डिटैच होके जो विसरल ऑर्गन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विसरल ऑर्गन? ऑल द इनरली लोकेटेड सॉफ्ट ऑर्गन प्रेजेंट इन योर बॉडी इज कॉल्ड एज व्हाट? द विसरल ऑर्गन. विथ व्हिच मसल्स? स्मूथ मसल्स, है कि नहीं? तो बहुत ही स्मूथ होगा, डेलिकेट होगा, उसको प्रोटेक्शन कौन देगा? And that bone which is actually comes to close to lie to these visceral organs are called as visceral bones. Human being में absent है क्योंकि human being में completely endoskeleton हर जगह present है, so it is being well protected likewise, right? Example हम दे सकते हैं
ओस फैल्सिपेरम हो गया, ओस कॉर्डिस हो गया, ओस पेनिस हो गया. There are so many different type of example. Just इसको आप लोग skip करेंगे तो मेरे हिसाब से better है. Just remember the first three, right? Sir, बोलिए. say ER of sickle कौन सा? हाँ, ER of sickle. ये रसिकल उसमें आ जाएगा, मेम्ब्रेनस में आ जाएगा. एनसीईआरटी टेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं जा रहे हैं, राइट? तो इतना मेरे पे भरोसा रखिए कि मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही एग्जाम्पल आपका एग्जाम में आएगा. उल्टा सीधा एग्जाम्पल याद रखने की कोशिश भी मत करिए, नहीं तो आप लोग खाली ब्रेन वेस्ट, टाइम वेस्ट और कुछ नहीं. सो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. एज पर द क्लासिफिकेशन बताइए तो क्या हम लोग का कंप्लीट हो चुका है? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कंप्लीट. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंडर स्केलेटल टिश्यू फिनिश्ड. बाकी क्या बचा है? वैस्कुलर, राइट? स्टार्ट कर दें वैस्कुलर. Vascular tissue, or it is always called as what? Fluid connective tissue. Why it is called as fluid connective tissue? Now, because the matrix is fluid. Character क्या है? Matrix is fluid. Number 2, और कैरेक्टर क्या है? मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था, याद करिए. All the cells of the connective tissue forms, synthesize the matrix and fiber except blood. याद आया? तो blood is with fiber के without fiber. Cells do not synthesize matrix or fiber. That is why it is fiberless connective tissue. Number 3, no regeneration. Here the cells do not have any regeneration power. लेकिन connective tissue में क्या था? सेल्स का रीजनरेशन पावर था. मैंने आपको बताया था मेसेनकाइम सेल्स, याद है? मैंने क्लियरली लिखाया था एरियोलर टिश्यू में मेसेनकाइम सेल्स व्हिच इज टोटिपोटेंट सेल्स which can regenerate the damaged connective tissue cells, right? But blood cells doesn't have any regeneration power. So RBC, WBC ये सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, याद रखिए. नो डिवीजन पावर. So this is the difference which is apart from the other connective tissue. तो ये कैरेक्टर एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है वैस्कुलर टिश्यू का, ये बाकी कनेक्टिव टिश्यू का कैरेक्टर नहीं है, याद रखिए. सो these are the characters belongs to the fluid connective tissue which makes them different from the other connective tissue. तो यहाँ से क्वेश्चंस आएगा. All the followings are the character of connective tissue present in the blood except, or how many of the followings are the character which is not found in normal connective tissue proper. समझ में आ गया? तो ये 3 पॉइंट्स से क्वेश्चंस रहेगा. Now we are coming to blood. ब्लड क्या है? रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की व्हाइट वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू? क्या है ये? व्हाइट इज रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का कारण क्या है? इट लुक्स रेड. व्हाइट इज लुक्स रेड. रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी या प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी और प्रेजेंस ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी बोथ क्या होगा? Because the RBC contains the iron containing respiratory pigment called as what? Hemoglobin. अब यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछेगा कि lymph is a white vascular connective tissue, right?
White looks white due to absence of RBC की presence of WBC. समझ में आ रहा है कि नहीं? ये रेड इसीलिए होता है कि इसमें आरबीसी प्रेजेंट है, वो व्हाइट इसीलिए नहीं होता, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है. किस लिए व्हाइट है वो ना? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ आरबीसी. क्योंकि डब्ल्यूबीसी तो यहाँ पे भी है. समझ में आया कि नहीं? ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल. थोड़ा सा सोचो, आंसर निकल जाएगा. So red vascular connective tissue, opaque, sticky and viscous fluid. Opaque, sticky and viscous fluid. Five times heavier than water. Slightly alkaline. pH क्या है इसका? 7.4, right? Slightly alkaline. And ये viscous है. Viscous मतलब supposed to be a drop of blood and a drop of water. अगर आप नीचे गिराते हैं तो which will be spread more? Water, because the viscosity is very less. Because as the blood contains the high viscosity, तो ये spread नहीं करेगा, confined रहेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? And this is heavier than the water, तो water के नीचे आ जाएगा ये. And it forms approximately 30 to 35% of the ECF. What is the full form of ECF? Extracellular. The fluid which is present outside the body, sorry, outside the cell is called as what ना? Extracellular fluid. तो आपके बॉडी में क्या क्या एग्जांपल हो सकता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का? खाली नॉलेज में आपके लिए बोल रहा हूँ. What could be the example of ECF? ECF का क्या क्या एग्जांपल है? टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड. थोड़ा सा विजुअलाइज करिए फटाफट. टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, ब्लड होगा, लिम्फ होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, सिलोमिक फ्लूइड. समझ में आ रहा है कि नहीं? पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ, एक्वस ह्यूमर. विट्रस ह्यूमर इज नॉट ए फ्लूइड. मैंने विट्रस ह्यूमर नहीं बताया इसीलिए. विट्रस ह्यूमर क्या है ना? जिलेटिनस. दैट कम्स नॉट कम्स अंडर द ईसीएफ. सैनोवियल फ्लूइड, ये सब क्या होगा? ECF. And which is the most important ECF present in your body? Blood. Percentage देखिए कितना लिखा मैंने? 30 to 35% of the ECF present in the blood looks to be what in the blood. And it is 6 to 10% of body weight. 6 to 10% of the body weight. आप body weight के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में हम ये बता सकते हैं कि 6.8 लीटर in a healthy human being. What is the amount of blood present in the healthy human being? The 6.8 liter. तो हम लोग एक्चुअली यहाँ पे वैरी करते हैं, पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, बट एवरेजली हम लोग लेते हैं 6 to 10%, एवरेजली 7% भी काउंट कर सकते. So this is all about the physical characteristics of the blood. Now we are coming to the composition. ब्लड का दो पार्ट है. One is called as plasma. Second is called as what? Corpuscles or formed element. Corpuscle or formed element. प्लाज्मा का परसेंटेज कितना है? 55%.
फॉर्म्ड एलिमेंट और corpuscles का परसेंटेज कितना हो गया? 45%. Actually, the plasma actually the matrix है. It is the matrix part of blood, and this is actually the cell part of the blood. हम लोग थोड़ा सा प्लाज्मा में आते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्लाज्मा का कंपोजिशन में आ जाते हैं. इट इज कंपोज्ड ऑफ नंबर 1 वाटर. हाउ मच? 90 to 92% of the blood is found of what now? Water. Number 2, inorganic और mineral और salt हम बोल सकते हैं. ये कितना परसेंटेज है ना? 1 to 2% only. Organic percentage कितना हो जाएगा ना? Also 1 to 2%. And what are the example comes under the organic part of the blood? Inorganic में तो बहुत सारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, ये सब सॉल्ट आ जाएगा. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक पार्ट में. ऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या आएगा परसेंटेज? कंपोजिशन बोलिए. ग्लूकोज, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, अमाइनो एसिड, creatine, etc. आएगा ये सब. So these are the composition of the blood which is comes under the organic part of the plasma. Now number 4, protein part. प्रोटीन का परसेंटेज कितना है? 6 to 8% of the plasma is found of what of protein. What are the examples of the protein? Albumin, globulin, fibrinogen, prothrombin, etc. ऐसे तो बहुत सारा प्रोटीन है. ये सब इंपॉर्टेंट है. एंड वी नीड टू डिस्कस अबाउट एटलीस्ट एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन. ये तीनों के बारे में एक एक लाइन हम लोग को जानना पड़ेगा. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एल्बुमिन? यस, एनीबॉडी? ऑस्मोटिक. ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या है? बोलो. बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करना, that is called as osmotic balance or osmotic pressure. Supposed to be you have been asked to donate, supposed to be what now 500 ml to a friend who meet an accident immediately, right? You donated 500 ml blood to your friend. What is the amount of blood present in your body if you have 7 liter blood in your body? तभी वो क्वेश्चन का आंसर बोला कि to maintain the body fluid of the body which protein is necessary? Albumin. फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या देता है ना? 6.5 लीटर. मतलब तुमको कुछ पता नहीं, हवा में उड़ रहे हो. समझे कि नहीं समझे? अभी आपने क्या बोला है? टू मेंटेन द बॉडी फ्लूइड. अगर मेंटेन ही करना तो 6.5 लीटर कैसे हो गया? आप बॉडी में जितने ब्लड है उतना ही रहेगा, तभी तो बोलेंगे मेंटेन किया वो. आप तो दो आंसर दे रहे हैं, कैसे चलेगा? आप नीट कैसे क्वालिफाई करेंगे? आप तो अपने सवाल का आंसर में स्टिक ही नहीं रह रहे, दो अलग अलग चीज बोल रहे हैं. बैठो. Who maintain the osmotic balance or the osmotic pressure of the body fluid? Albumin.
How? Now, by means of withdrawing the body fluid or water from the surrounding tissue fluid, blood का quantity decrease कर गया, 7 लीटर था अभी हो गया 6.5 लीटर, तो प्रेशर कम नहीं हो जाएगा बॉडी का जो ब्लड का जो फ्लो है वो कम नहीं हो जाएगा। तो ये एल्बुमिन प्रोटीन क्या करेगा ना, ब्लड से बाहर जो टिश्यू फ्लूइड है वहां से वाटर को सॉक कर लेगा, वहां से वाटर को वो एंट्री करा देगा इनटू ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगेन कम बैक टू नॉर्मल। सो आफ्टर डोनेटिंग द ब्लड, द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन योर बॉडी विल बी एज यूजुअल नॉर्मल। अगर इतना इजी क्वेश्चन होता तो मैं पूछता आपको कि भाई 7 लीटर है 500 ml दे दिए तो कितना बचा। मैं क्या बोला था फर्स्ट क्लास में, नीट का क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, क्या होता है, ट्रिकी। मैं अपने भाषा में उसको क्या बोलता हूँ, सिंपल एंड पॉइजनस, है ना। सिंपल लगेगा एकदम, अरे ये भी कोई क्वेश्चन है, हाँ भाई यही क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन गलत करके आओ सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है। हाँ मैं कहा मना कर रहा हूँ भाई, कॉम्प्लेक्स है डिफिकल्ट है, सिंपल ही है, लेकिन आप जैसे बेवकूफ सब फंसेंगे उसी में। नेक्स्ट ईयर फंसना नहीं फंसना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं 3 पॉइंट लिखा देता हूं। एल्बुमिन act as osmotic protein to maintain the osmotic balance and quantity of body fluid or blood. Number 2, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करता है बताइए, ग्लोबुलिन क्या करेगा। हाँ, इनकम्प्लीट नॉलेज ऑलवेज हार्मफुल टू कैरियर। अल्फा बीटा गामा तीनों ऑप्शन में दिया है, ऑल ऑफ दिस नहीं दिया है। सर हमने तो पढ़ा था अल्फा बीटा गामा तीनों ही बॉडी डिफेंस में हेल्प करता है। हाँ तो आपने अल्फा बीटा क्यों बोला, बिल्कुल ज्यादा कम नहीं है, ओनली। आप पूछेंगे ऐसे क्यों, व्हाई द अल्फा एंड बीटा डजंट हेल्प इन द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। आप लोग पढ़े हैं ना इम्यूनोग्लोबुलिन, why it is named so immunoglobulin, because the globulin protein helps in the immunity। ये जो एंटीबॉडी आप लोग जानते हैं वाई सेप्ट स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, ये एंटीबॉडी किससे बना है ना, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है। एंड आप लोग जानते हैं कि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड दिस 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 light polypeptide and 2 heavy polypeptide chain gives rise to what na antibody, and antibody chemically made up of what na protein, which protein, which globulin protein, gamma globulin protein। क्यों, why not अल्फा बीटा, क्योंकि गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन एंटीजन को बाइंड करता है, हिस्टामिन को बाइंड करता है। तो हु विल एक्ट एज अ इम्यून, दैट इज इम्यूनिटी, गामा ग्लोबुलिन, क्योंकि अल्फा बीटा एंटीजन को बाइंड नहीं करता है। तो जो एंटीबॉडी बाइंड करेगा, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन एंटीजन को बाइंड करेगा, वही तो हेल्प करेगा एंटीबॉडी को, वही तो हेल्प करेगा इम्यूनिटी का। तो अल्फा बीटा डज नॉट बाइंड्स टू द हिस्टामिन, डज नॉट बाइंड्स टू व्हाट ना एंटीजन, दे एक्चुअली बाइंड्स विद व्हाट ना डिफरेंट हार्मोन, डिफरेंट एंजाइम, बिलिरुबिन, बिलिवेरिडिन, वो अलग चीज, ठीक है। एक्ट एज डिफेंस प्रोटीन फॉर एंटीबॉडी।
It is, यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, गामा ग्लोबुल. And the last one is fibrinogen. This is actually synthesized in liver and इसका main function क्या है? Coagulant या anticoagulant? Act as coagulant protein. Coagulation में help करता है, हम लोग पढ़ेंगे chemical sorry body fluid circulation chapter में mechanism of blood clotting or coagulation will be discussed. What is the role of fibrinogen? I will tell there. So this is all about the different type of plasma protein which form the 6 to 8% of the plasma. Now we are coming to, देखिए सीरम आप लोग नाम सुने हो, right? सीरम क्या है? Will clot or not clot? Why not the serum clot? सीरम क्या है? ना प्लाज्मा माइनस एंड क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पे कौन है? फिब्रिनोजेन है कि नहीं? Means plasma without protein is called as what? Serum. The serum is with protein ke without protein? Without. We are coming to blood corpuscles or formed element. So I'm coming to the first one. That is RBC or erythrocyte. In all vertebrates, vertebrate के केस में आरबीसी का शेप साइज क्या होगा? ओवल होगा, न्यूक्लिएटेड. यहाँ पे आप लोग को लिखना है एक्सेप्ट मैमल. So all vertebrate except mammal, it is oval, nucleated, and biconvex. So in mammal, except camel and llama. Camel and llama very close to each other. Llama is belongs to what? Just like camel and found in the South America. So camel and llama, they are belongs to the same type of your family history of the evolution. And in mammals, except the camel and llama, it is what? The RBC is rounded. Nucleated की enucleated, biconcave की biconvex, biconcave and enucleated. What is the meaning of enucleated? देखो enucleated, enucleated दोनों में डिफरेंस है. कौन आवाज कह रहे? लोग ऑनलाइन करते क्यों है और मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हैं मुझे भी समझ नहीं आता. Enucleated and anucleated में डिफरेंस क्या है? Anucleated means absence of nucleus, right? Then enucleated क्या है? Nucleated from the beginning, but at a particular stage during the maturation, during the development, the nucleus has been lost. इसीलिए beginning में nucleus रहेगा, but matured RBC में nucleus absent होगा. So nucleus lost at some stage is called as what? Enucleated. And that stage is called as reticulocyte stage.
That stage is called as what? Reticulocyte stage. तो reticulocyte stage में इनका न्यूक्लियस जो है वो लॉस हो जाता है, and that is why the matured RBC without any nucleus and it is called as enucleated. साइज हो जाएगा 7 to 8 माइक्रोमीटर. Mitochondria and other cellular organelle absent. भाई माइटोकॉन्ड्रिया absent है तो एरोबिक रेस्पिरेशन की एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब आप लोग समझदार है, एसेशन रीजन क्वेश्चन बनाने में आप लोग कैपेबल है. यहां से एसेशन रीजन क्वेश्चन रहेगा कि why the RBC only carry the hemoglobin, why the only RBC is carrying the oxygen, maximum percentage of the oxygen is carrying by what, maximum percentage of the oxygen is carried by what, in RBC. So why the, what is the significance why the RBC is enucleated, why the RBC is without mitochondria, is there any significance, क्या है उसका एडवांटेज, क्या है सिग्निफिकेंस. नंबर 1 जो ऑक्सीजन वो कैरी कर रहा है वो ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाएगा बिकॉज़ द माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, सो नो एरोबिक बट anaerobic. Number 2, absence of the nucleus and other cell organelle makes the more space for the availability of more number of hemoglobin. And one RBC contain how many number of hemoglobin molecule? 280 million molecule of hemoglobin present in one RBC. आप समझिए आपके बॉडी में ट्रिलियंस नंबर ऑफ आरबीसी है, तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन कितना ज्यादा जरूरत होता है एवरी सेकंड, वो भी थोड़ा इमेजिन कर लीजिए. एंड दैट इज व्हाई वी नीड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीजन टू बी कैरिड इन द बॉडी इज वेरी हाई, एंड दैट इज व्हाई इट इज नीड मोर स्पेस. अब देखिए ये सेल है साइड व्यू में, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो बाइकन्वेक्स होगा कि बाइकनकेव होगा? कन्वेक्स. अब सोचिए न्यूक्लियस एब्सेंट है, कैसे दिखेगा? साइड व्यू में आप आरबीसी कैसे दिखाई देगा हम लोगों का? बाइकनकेव लिखा ना यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ आरबीसी. लेकिन अगर हम लोग नॉर्मली देखें इन एवरी अदर वर्टिब्रेट्स it is looks like what na biconvex because of the presence of what nucleus. आगे बढ़ते हैं हम लोग. आरबीसी काउंट कितना होगा मेल में और फीमेल में? मेल में ज्यादा होगा and that is what ना 5 to 5.5 million. एंड उसका यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? पर सीएमएम ऑफ ब्लड. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएमएम? क्यूबिक सेंटीमीटर होता तो सीएम लिखता है, मैं सीएमएम क्यों लिख रहा हूं? क्यूबिक मिलीमीटर. एंड फीमेल क्या है? 4.5 to 5 million per cmm of blood. इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जिसमें हम लोग मेजर करते हैं आरबीसी काउंट? हेमोमीटर की हेमोसाइटोमीटर. एंड हेमोमीटर इज एक्चुअली द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट टू काउंट व्हाट ना हेमोग्लोबिन काउंट. तो हेमोग्लोबिन काउंट के लिए हेमोमीटर एंड आरबीसी काउंट के लिए हेमोसाइटोमीटर. नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब नाम सुने होंगे डेंगू फीवर. नाम सुने डेंगू फीवर? तो डेंगू फीवर में सॉरी एनीमिया, आई एम टेलिंग अबाउट द एनीमिया. एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी काउंट इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? डिक्रीज करता है. व्हाट इज द टेक्निकल वर्ड फॉर द डिक्रीज्ड आरबीसी काउंट एंड व्हाट इज द
टेक्निकल वर्ड और मेडिकल वर्ड फॉर द इंक्रीजिंग आरबीसी काउंट। ये तो नॉर्मल है। Increased RBC count is called as polycythemia. Decreased RBC count. Decreased RBC count को क्या बोलते हैं? Very good. एरिथ्रोसाइटोपिनिया, तो एनीमिया रिलेटेड कौन सा है? एरिथ्रोसाइटोपिनिया की पॉलीसाइथेमिया, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द कलर ऑफ द आरबीसी। आरबीसी इज रेड ड्यू टू हेमोग्लोबिन, एंड हेमोग्लोबिन का दो पार्ट, एक है वन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल विथ व्हाट ना 4 हेम ग्रुप एंड 1 ग्लोबिन। हेम क्या है ना, आयरन कंटेनिंग है कि नहीं, एंड ग्लोबिन क्या है ना, प्रोटीन, एंड दैट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 अल्फा and 2 beta. So 2 alpha polypeptide chain and 2 beta polypeptide chain means one globin protein is made up of 4 polypeptide chain. With 4 heme group, it is formed what now? 1 hemoglobin. 1 RBC with 280 million hemoglobin molecule. So one RBC contains 280 million number of hemoglobin molecules, and one hemoglobin molecule contains 4 heme group and 1 globin protein. समझ में आ गया? नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे, कंफर्म करिए। कंप्लीट। एक्चुअली अगर हम लोग एक हेमोग्लोबिन देखें, सपोज टू मान लेते हैं एक हेमोग्लोबिन है, यहाँ पे ग्लोबिन प्रोटीन है, वन हेमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड ऑफ व्हाट? 4 heme group. How many heme group? 4 heme group. And each heme group is formed of porphyrin ring. Porphyrin ring, टोटल नंबर कितना है porphyrin ring का? 4. What is the number of porphyrin ring? क्योंकि हेमोग्लोबिन का हेम ग्रुप का नंबर कितना है? 4 है। नहीं दिखा सकता। पोरफायरिन रिंग का नंबर कितना है? 4। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये सारे के सारे क्या है ना, हेमोग्लोबिन है, ये हेम ग्रुप है, तो हेम ग्रुप का नंबर क्या है? 4। तो ईच हेम ग्रुप कंटेन्स हाउ मेनी पोरफायरिन रिंग? 1। तो टोटल पोरफायरिन रिंग का नंबर कितना हो गया? 4। एंड यहाँ पे इसके अंदर क्या है ना, आयरन। हाउ मेनी आयरन प्रेजेंट इन ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल? 4। ये क्या है? ग्लोबिन। समझे कि नहीं समझे? एंड यू नो, आप लोग शायद पढ़े होंगे कि आयरन का ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कब प्रेजेंट हो गया, फिर 2+ या फिर 3+? 2+। ये सब किस फॉर्म में होगा? फेरस फॉर्म की फेरिक फॉर्म? अगर ये फेरस से फेरिक हो गया तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेथेनोमोग्लोबिन। पढ़े हो कि हेमोग्लोबिन मॉडिफाइड टू फॉर्म मेथेनोमोग्लोबिन, and that gives rise to oxygen binding capacity. Carrying capacity increase करता है कि नॉर्मल रहता है कि डिक्रीज करता है? डिक्रीज करता है। one of the factor which is associated with blue baby syndrome. अगर आपको हर चीज को लिंक करना समझ में आ जाएगा कि किसके साथ कैसे लिंक करना है, तो हर चीज विजुअलाइज हो जाएगी। जब तक उसको लिंक नहीं कर पाएंगे तब तक फंसते रहेंगे। कंप्लीट है? and one hemoglobin
मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है एट ए टाइम? ईच आयरन कैन बाइंड विथ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. So how many oxygen can be carried by one hemoglobin molecule maximum at a time? कितना होगा? Simple 4. तो एक hemoglobin maximum 4 ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं at a time. Because one oxygen molecule can be bind with one iron molecule. Hemoglobin count. हेमोग्लोबिन काउंट मेल में क्या है एंड फीमेल में क्या है? मेल में ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि आरबीसी का काउंट मेल में से ज्यादा होगा क्योंकि मेल में आरबीसी काउंट ज्यादा था ना. एंड दैट इज 14 प्लस माइनस 2 ग्राम परसेंट. ग्राम परसेंट का मतलब क्या है ना? ग्राम पर 100 ml. ग्राम परसेंट का मतलब पर 100 ml. That is why it is called as gram percent. Plus minus 2 ये कम ज्यादा हो सकता है. And in case of female, it is actually 12 plus minus 2 gram percent. और पर 100 ml. And instrument का नाम मैंने क्या बताया था? हाँ, हेमोमीटर. जिसको समझ में नहीं आएगा, as fast as possible मुझे पूछ लीजिएगा. लाइफ स्पैन कितना है? Why the lifespan is so reduced? Because of the absence of nucleus and because of the absence of other cell organs. So the lifespan is 120 days approximately. 118 to 120 vary करता है. And after the death of the lifespan, what after the death of the RBC, हम किसको बोलते हैं? तो ग्रेवयार्ड ऑफ RBC. स्प्लीन में होता है क्या? Why it is called as graveyard? Not only the spleen. Spleen में actually maximum percentage of dead RBC का grave होता है, graveyard होता है, इसीलिए spleen को हम लोग बोलते हैं graveyard of RBC. But apart from the spleen, other structure of your body is associated with the graveyard also. And वो कौन है? Bone marrow and liver. Liver and bone marrow. But mainly कौन है? Spleen. So actually, dead or worn out or damaged RBC in liver, spleen and bone marrow. In the liver, spleen and bone marrow, क्योंकि liver से spleen and bone marrow में एक स्पेशल सेल प्रेजेंट है जिसका नाम है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल. Cell is called as what? Reticulo endothelial cell, which is mainly found in the liver, spleen and bone marrow. And this particular cell will make a dead, worn out and damaged RBC into what? Na hemosiderin plus bile pigment. तो ये डेड वर्न आउट आरबीसी में एक्चुअली क्या प्रेजेंट है? हेमोग्लोबिन. तो हम लोग यहाँ पे किसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं? हेमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू हेमोसाइडरिन प्लस bile pigment. So damaged or the breakdown of the RBC is called as what? Na hemolysis. तो hemolysis process कहाँ पे हो रहा है भाई? कहाँ पे हो रहा है hemolysis का process? Liver, spleen, bone marrow. Under the influence of which cell? Reticuloendothelial cell. Breakdown of hemoglobin called as hemolysis, converted into hemosiderin and bile pigment. तो हेमोसाइडरिन एक्चुअली आयरन प्रेजेंट होगा. तो ये हेमोसाइडरिन क्या होगा ना? रिसाइकिल हो जाएगा टू फॉर्म न्यू हेमोग्लोबिन. हेमोसाइडरिन वेस्ट नहीं होता है. हेमोसाइडरिन में क्योंकि आयरन है तो वो फिर से न्यू हेमोग्लोबिन बनाएगा. लेकिन ये जो बाइल पिगमेंट है ये क्या है? वेस्ट है कि नहीं? And that waste is eliminated in the different form in the body.
आपके बॉडी से डिफरेंट फॉर्म में बाइल पिगमेंट रिलीज होता है। स्टूल का कलर क्या है ना, येलो। फेकल मैटर का कलर क्या है ना, येलो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट ना, बाइल पिगमेंट। यूरिन का कलर क्या है ना, फेंट येलो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट ना, यूरोक्रोम। एंड यूरोक्रोम एक्चुअली क्या है ना, मॉडिफाइड बाइल पिगमेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बॉडी से ये बाइल पिगमेंट अलग अलग वे से बाहर निकल जाता है। एंड आप कभी फील किए ये येलो कलर हमेशा कहाँ से आता है? मतलब आपके बॉडी में ये बाइल पिगमेंट हमेशा सीक्रेट होता है। मतलब ये क्या है ना कि आरबीसी, जो डेड आरबीसी, हमेशा रिसाइकलिंग हो रहा है 24/7। समझ में आ रहा है कि नहीं? कंप्लीट है? कोई दिक्कत? Formation of RBC is called as erythropoiesis. Which hormone is essential for the erythropoiesis? Which is the erythropoietic organ hormone? That is called as what? Erythropoietin. Erythropoietin secreted by kidney. So erythropoietin hormone, which is responsible for the erythropoiesis, secreted by kidney. And the erythropoietic organ, अभी मैंने बात किया था, erythropoietic organ सीक्वेंस। एरिथ्रोपोइसिस को अदरवाइज हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस अदरवाइज कॉल्ड एज हेमोपोइसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। एंड हु एक्ट एज एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन? अभी हम बात कर रहे थे पहले, क्या होगा ना, यॉक, देन इट इज फॉलोड बाय बोन मैरो। Yolk sac in the early embryo, liver in the fetal stage, and after birth, in case of adult, it is bone marrow. Which bone marrow? Mainly red bone marrow. समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे मैंने आपको बोला था कि बोन सेल फॉर्म्ड फ्रॉम, बोन सेल कॉल्ड एज व्हाट ना, ओस्टियोसाइट, फॉर्म्ड फ्रॉम osteoblast. Cartilage cell formed from chondroblast. That is what? Now the liver cell adipocyte formed from lipoblast. वैसे ही erythrocyte formed from hemocytoblast or erythroblast. Matured RBC or erythrocyte formed from erythroblast or hemocytoblast. एंड आप लोग को पता है एनीमिया का कारण क्या क्या है, बताइए? मतलब मैं आपको उल्टा पूछ रहा हूँ कि एरिथ्रोपोइसिस के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या एसेंशियल है। एरिथ्रोपोइसिस के लिए क्या क्या एसेंशियल है? बिना आयरन का हो जाएगा? आयरन नीड, प्रोटीन नीड, और क्या चाहिए? उसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइनोकोबालामिन और कोबालामिन, दैट इज
विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का अदर नेम क्या है? विटामिन B9। These four essential for erythropoiesis। चारों में से अगर कोई एक भी एब्सेंट होता है तो एरिथ्रोपोइसिस क्या होगा? ना एब्सेंस होगा या तो डेफिशिएंसी होगा, एंड दैट गिव्स राइज टू एनीमिया। दैट इज व्हाई एनीमिया आर ऑफ मोस्टली, अगर हम बात करें तो 17 to 18 डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया है। आप लोग बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस कल इतने में ही कंफाइंड रहिए। अब धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि एनीमिया का डिफरेंस क्या है, कितने टाइप का एनीमिया है। जेनेटिक्स में आप लोग पढ़ोगे, एरिथ्रोब्लास्टिस पाइटलिस एक टाइप का एनीमिया है कि नहीं? एनीमिया मतलब absence or loss of mostly deficiency of blood and deficiency of RBC is called as what? Anemia। एनीमिया का बहुत सारे टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। कंप्लीट है? नाउ वी आर कमिंग टू द WBC और ल्यूकोसाइट। WBC और ल्यूकोसाइट, it is amoeboid, nucleated, larger than RBC। साइज क्या है? That is 12 to 20 माइक्रोमीटर इसका साइज है, लेकिन आरबीसी का कितना था? 7 to 8। But why the WBC can be comes to outside of the blood vessel? Why not the RBC? Still the RBC size is very small. The WBC size is very large in comparison to this. But why the WBC can be comes out of the blood vessels? Why not the RBC? Because it is amoeboid in shape. अरे समझे कि नहीं? And amoeboid रहेगा तो वो easily squeeze होके बाहर निकलेगा कि नहीं? Supposed to be this is actually the capillary pore and ये supposed to be WBC हो गया, तो WBC ऐसे squeeze होके बाहर निकल सकता है, but RBC cannot because RBC का size क्या है ना 7 to 8, but size sorry उसका shape क्या है ना round shape, लेकिन WBC क्या है ना amoeboid, so they can be squeezed out and this process is called as diaphytesis। Squeezing out of WBC to capillary pore। To interstitial fluid or tissue fluid। It's called diaphytesis। एंड इसी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ में WBC रहेगा, नो RBC। जानते हो कि नहीं? ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है, वही लिम्फ बनाता है। लिम्फ इज विथ WBC विदाउट RBC। कॉज क्या है ना? डायबिटीज। अगर WBC का भी डायबिटीज नहीं होता तो टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड विदाउट एनी ब्लड सेल होता। समझे? WBC count 6,000 to 8,000 पर CMM। भाई देखिए आरबीसी का नंबर कितना था? मिलियंस में। WBC का नंबर कितने में आ रहा है? 1000 में। अगर हम लोग कंपेयर करें तो इट विल बी व्हाट? RBC is to WBC is actually 600:1। मतलब एवरी 600 RBC में एक एक WBC होता है। इसीलिए आप सोचिए ब्लड का कलर रेड क्यों? बिकॉज RBC तो नेग्लिजिबल, WBC तो ऑलमोस्ट नील है, ऑलमोस्ट वेरी लिस्ट परसेंटेज है। WBC देखिए उसके हिसाब से 600 टाइम्स। क्लियर है? नाउ जैसे वहां पे RBC का इंक्रीजिंग काउंट था, WBC काउंट भी इंक्रीज क्या होगा? ब्लड कैंसर में किसका नंबर इंक्रीज करता है?
Why not the RBC? बताइए ना। ब्लड कैंसर में डब्ल्यूबीसी का काउंट क्यों इंक्रीज करता है? हाँ, कौन बोल रहा है? हैगोसाइटिक होने से कैंसर का क्या कारण है? डू यू नो व्हाट इज कैंसर? डू यू नो क्या है कैंसर? सेल डिवीजन होने के लिए न्यूक्लियस चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए न्यूक्लियस। तो फिर आरबीसी में न्यूक्लियस है? देखो, इसी वजह से आप लोग एसेसन रीजन गलत करके आते हो। Why the WBC only increasing in the cancer? Why not the RBC? Why not the platelet? क्योंकि only nucleated blood cell कौन है? तो भाई कैंसर होगा तो किसको होगा? आरबीसी को कैंसर हो सकता है, प्लेटलेट को कैंसर होगा, तो फिर किसका नंबर इंक्रीज करेगा? डब्ल्यूबीसी। सिंपल है। रावण का दिमाग लेके चलोगे तो रावण जैसे सोचोगे, 10-10 दिमाग। पता नहीं कहां से आप लोगों को कंसेप्ट आता है, आई डोंट नो। पहले तो अपने दिमाग में बोलो कि हम लोग को बहुत ही छोटा सोचना है, सिंपल सोचना है, क्लीन एंड क्लियर एंड परफेक्ट सोचना है। इसीलिए थोड़ा सा दिमाग को बेवकूफ बना के रखो। बहुत ज्यादा चालाक हो जाएगा ना दिमाग, पता नहीं 5 तो अलग अलग चीज सोचेगा, जो इतना सोचना चाहिए उसका 10 गुना सोचेगा वो। एंड 10 गुना सोचने से क्या होता है? क्या होता है? एक के बदले 4-4 आंसर दिखाई दे। सर ये भी तो सही है, ये भी सही है। नीट वाले तो बेवकूफ है, 4-4 आंसर देके रखा है। Increased WBC count is called as leukocytosis and decreased WBC count is called as leukopenia. Complete है? So I'm coming to the next page. And the formation of WBC जैसे वहां पे RBC प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ल्यूकोपोइसिस। एंड ल्यूकोपोइसिस कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। Just like RBC, the WBC also takes place in the bone marrow formation. What are the types of the WBC? बहुत ही सिंपल, आप लोग जानते हैं। एक है ग्रेन्युलोसाइट, second is agranulocyte. Here actually the granules are present in the cytoplasm, then it is called as granulocyte. Absence in the cytoplasm called as agranulocyte. ग्रेन्युलोसाइट के भी 3 अलग अलग टाइप है। एक है न्यूट्रोफिल, then basophil, third is acidophil. एक्चुअली ग्रेन्युलोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं ना? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL, नाम सुने होंगे। इसका मतलब क्या है? पॉली मतलब मेनी, मॉर्फो मतलब क्या है ना? स्ट्रक्चरली और मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, किसका न्यूक्लियस? ल्यूकोसाइट, WBC। जिस न्यूक्लियस जिस WBC का न्यूक्लियस में मॉर्फोलॉजिकली मेनी और मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट ना? PMNL। एंड PMNL कौन है? ग्रेन्युलोसाइट के ग्रेन्युलोसाइट। एंड सबसे ज्यादा परसेंटेज किस ग्रेन्युलोसाइट का नंबर है? न्यूट्रोफिल। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज PMNL लाइक न्यूट्रोफिल। PMNL लाइक न्यूट्रोफिल, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज कौन है? Neutrophil. Why it is called as neutrophil? Because this particular cell neutrophil can absorb both the acidic stain and basic stain both.
भाई बोथ जो एसिडिक स्टेन एंड बेसिक स्टेन एब्जॉर्ब करेगा उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल, सो कॉल्ड एज व्हाट? न्यूट्रोफिल। एंड बेसोफिल कौन सा स्टेन एब्जॉर्ब कर सकता है? बेसिक स्टेन, जिसका नाम है मिथाइलिन ब्लू। एंड एसिडोफिल कौन सा स्टेन एब्जॉर्ब कर सकता है? एसिडिक स्टेन, जिसका नाम है ईओसिन। दैट इज व्हाई द एसिडोफिल इज अदरवाइज कॉल्ड एज व्हाट? ईओसिनोफिल। ईओसिनोफिल उसका एक्चुअल नाम नहीं है, एक्चुअल नेम क्या है? एसिडोफिल। Why it is called as eosinophil? Because the stain or the absorb what na acidic stain called as eosin. समझे कि नहीं समझे? And agranulocyte without any granules, and इसके अंदर क्या आ जाएगा ना? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। कंप्लीट है? Make 6 column. We need to write some point under this. Number 1. Percentage. This is actually 60 to 65%. This is 0 to 1%. Acidophil 2 to 3%. Monocyte 2 to 10%. Lymphocyte second largest to the second most abundant, that is 20 to 45%. The abundant WBC कौन हो गया? Neutrophil. Second most abundant कौन हो गया? Lymphocyte. Number 2, that is nucleus. Nucleus न्यूट्रोफिल में मल्टी लोड होता है. बेसोफिल हो जाएगा एस सेट और 3 लोड. एसिडोफिल हो जाएगा बाइलोड. मोनोसाइट हो जाएगा बीन और किडनी सेट. एंड लिम्फोसाइट हो जाएगा राउंडेड. साइटोप्लाज्म न्यूट्रोफिलिक. As already told, both they can stain acidic and basic. क्या हुआ? बाइलोड. बेसोफिल क्या हो जाएगा? बेसोफिलिक. स्टेन का नाम क्या है? मिथाइलिन ब्लू. एसिडोफिल हो जाएगा एसिडोफिलिक. The stain is called as acidic stain. Eosin. That is why it is eosinophil. मोनोसाइट भी बेसोफिलिक है एंड लिम्फोसाइट भी बेसोफिलिक है. Number 4, granules.
इन साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा। नंबर 5, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन actually it is 4 to 8 hours. This is 4 to 8 hours. This is also 4 to 8 hours. This is 10 to 20 hours. And सबसे longest lifespan किसका होता है? Lymphocyte. And that is why they can memorize for the long term, right? याद है ना? So days, month, and years also. Number 6, formation. कहाँ फॉर्मेशन होता है ना? बोन मैरो। यहाँ पे भी डू लिखिए, डू डू यहाँ पे नोट कैसे This is also bone marrow. But lymphocyte बहुत सारा अलग अलग जगह पे फॉर्मेशन होता है apart from the bone marrow. It also found in the lymph node, spleen, thymus, Peyer's patches. These are the source from which the lymphocyte formed. And the last point, number 7, function. Phagocytic, soldier of the body. It is act as mast cell. याद आया? याद आया कि नहीं? So which blood cell act as a mast cell? Basophil cell. And क्या क्या secrete करता है? Heparin, histamine, serotonin. Number increase during what now? That is parasitic infection. So number increase during allergy and parasitic infection, also role in immunity. हम लोग पढ़ेंगे अलग चैप्टर में। नेक्स्ट है ये जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट का क्या फंक्शन है? फैगोसाइटिक होगा कि नहीं? मोनोसाइट भी फैगोसाइटिक है। एंड ये क्या करता है? डेड सेल्स और डेड जो वर्न आउट है, जो ब्लड का जो इम्प्यूरिफाइड स्ट्रक्चर है जो बॉडी, उसको क्लीन करता है। दैट इज व्हाई इट इज एक्ट एज स्कैवेंजर। ब्लड को क्लीन करता है। दैट इज व्हाई इट इज एक्ट एज व्हाट एज स्कैवेंजर। एंड द लास्ट वन, इट इज forms antibody, forms the antibody and healing भी करता है। This also helps in the process of healing. So these are the functions. देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो बोल लीजिए। समझ में आ गया? बाकी बचा कौन सा सेल, कौन सा बचा है? प्लेटलेट बचा है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्लेटलेट से स्टार्ट करेंगे।